अल-बुराक मस्जिद ब्लैकबर्न में अमेरिका से तशरीफ लाए मारूफ आलमदीन शेख लुकमान अफंदी ने मुसलमानों की समाजी और अखलाकी जिम्मेदारियों पर खुसूसी खिताब किया। जुमा के खुतबे में बरतानिया भर से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शकील इस्लाम की यह रिपोर्ट। ब्लैकबर्न की अल-बुराक मस्जिद में अमेरिका से शेख लुकमान अफंदी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और यूरोप में आबाद मुसलमानों के इस्लामी तर्ज जिंदगी पर एक खुसूसी लेक्चर दिया। बरतानिया भर से लोगों की बड़ी तादाद उन्हें मिलने के लिए आई। I'm very honored to come here because, as we were speaking about earlier, I'm being pulled here. When people invite us, we come. When they don't invite us anymore, we go to another place. Allah's earth is large. But people in Blackburn, they are not even understanding the blessings that Allah has opened to them. It is very unusual, and I'm seeing that. But Allah works in unusual ways. And to those who are sincere, He may open it more, not to those who are looking for the dunya. So I'm honored to be here, and we're here to remember Allah, to give highest praises to the Prophet ﷺ, and to sit with people to talk about our Lord, and to talk about the mercy that Allah has sent, and to talk about our enemies, our shaitan and our nafs, this dunya and our hawa, and how to protect ourselves from it. And this is what my Shaykh has sent me for. My grand Shaykh, who has given us permission, Alhamdulillah, and our Shaykh Sahib al-Saif, Shaykh Abdul Karim al-Kibrisi, our grand Shaykh, Shaykh Nazim. This is not something that we are pushing for, that we want to do, but it is a job that is given to us. I'd like to say we are honored to have the Shaykh come to this masjid. So the second time now, Alhamdulillah, they like they said in their speech, they've been drawn to this masjid and they feel the power, Alhamdulillah, which is beautiful to have this opportunity to have their presence and bring the community together and spread love. This is the main thing. For us, it's about spreading love in the community and bringing everybody together at Al-Burak. ये जो अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब जो अमेरिका से आए हुए थे, उन्होंने एक बहुत अहसन पैगाम दिया है कि हमें इस मुल्क में कैसे मुसलमान बनकर रहना चाहिए, कैसे हमारी मुसलमानों के हक़ाइक़ हैं जो हमने दूसरों पर लाज़म करनी है और उनको हमने एक मिसाल बनकर कायम कर यहाँ रहना है, जिससे वो दूसरे मज़हब के लोग भी मुतअस्सिब हों और इस मज़हब में आएँ। Yeah, alhamdulillah, it's of course it's always a blessing to be able to make Jummah Salah, but today was extra special to be able to be in the presence of Sheikh Effendi and to listen to his bayan and his message, his beautiful message of how we should be the absolute example of the Prophet ﷺ, to attract people to love Islam, to love the Prophet ﷺ. And this is where all of us have fallen short, me included. And I take away this powerful message today into how I can be better and how I can attract the people around me who are non-Muslim to the cult of Islam, to the blessings of the Prophet ﷺ, and how we can bring them closer to us. माशाल्लाह जी, आज का प्रोग्राम बड़ा अच्छा, बड़ा रूह परवर था और बड़ा ही हमें इसमें जो है ना रूहानी महफिल में बड़ा इस्तेफादा हुआ है। अल्लाह करे कि इसी तरह, और ये सारा अल-बुराक मस्जिद को जो है ना क्रेडिट जाता है कि आज उन्होंने सारे अपने भाइयों को इकट्ठा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शकील सलाम, दुनिया न्यूज़।